Assalamu alaikum students, welcome to your first lecture. I hope that all of you are well and doing great at your homes. And so today we are going to start off with our first chapter of your science book, which is called Adaptations. And if you open your page number 1, then you will see the name of the chapter. It is Adaptations. And so in this chapter we will by the end of this chapter you will be able to define and describe what is a biome, explain the four main parts of an ecosystem, define habitat and explain the three things that a habitat needs, explain the process of adaptations, distinguish between a producer and a consumer in food chains. So first of all, let's begin the chapter. So, what is adaptation? Adaptation is a change in structure, function or behavior by which a species or individual improves its chance of survival in a specific environment. Adaptation क्या होता है? Adaptation basically when a living thing और कोई भी living thing जब अपनी living organism जो plants animals and human beings है जब वो अपने behavior में अपने function में और अपने structure में वो किसी तरह का भी change लेकर आती है ताकि वो survive कर सके एक environment में या वो उस environment में रह सके survive कर सके, उसको हम कहते हैं adaptation, यानी कि वो किस तरीके से उस चीज़ को अपनाती है. in Urdu if I use the right word that would be अपनाना. ठीक है, तो एनी चेंज कोई भी तब्दीली जो एक ऑर्गेनिज्म अपने आप में लेकर आता है to improve its chance of survival in a specific environment is called adaptation. Okay, in your book, if you open the page number 2 and 3 of your book, you will see adaptation. इधर यहाँ पे you will see on the third page the definition of adaptation which is written on your book is the adjustment or changes in the behavior, psychology and structure of an organism to suit an environment is known as adaptation. So whenever an organism it adjusts itself according to the environment to survive is called adaptation. So now let's move on to the next topic, biomes, world regions. So biomes, as you can see, world regions. Biome, there are a lot of different types of regions in the world. Okay, some are dry, some are like desert. Like there are hills, there are mountains, there are forests, there are grasslands, a lot of different regions in the world. And if I define briefly, then these regions are called biomes. Okay, and these biomes they have a certain type of climate. उनका एक certain climate होता है उस area उस region का. तो और वहाँ पे एक certain type of living organisms जो होते हैं वो exist करते हैं. So let's study. Imagine flying towards the Earth from space. Apart from the huge amount of sea, what else would you see? So, अगर आप for example, let's imagine that you are flying down from the space and you've jumped from space and or you're looking from space and what do you see? You'll see blue Earth. Mostly the Earth, you'll see a lot of blue color on the Earth. That's because of the water and the seas that exist. Because 70% of the part of the Earth is water. So a little bit of it is land. So you would see but just imagine कि आप क्या क्या देखोगे, आपको क्या नजर आएगा. So you would see forest, grassland, farmland and deserts. uh, deserts. The land has major regions of vegetation. um, these regions form a repeating pattern north and south from the equator. The different regions are called biomes. ठीक है, so ये जो different regions हैं इनको हम कहेंगे biomes. um, तो इक्वेटर होती है बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है अराउंड द अर्थ, और ये जैसे ये जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है.
इक्वेटर जो होती है वो दिस इमेजिनरी एग्जिस्ट होती नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि दिस एन इक्वेटर जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये बात हमेशा याद रखना कि हमेशा इक्वेटर के करीब जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जो जो आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे इक्वेटर के इस साइड पे और इस साइड पे उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो ये इक्वेटर है। तो आज जब आप सब स्पेस से देखोगे तो आपको ये डिफरेंट रीजन नज़र आएंगे, जिनमें आपको फॉरेस्ट भी नज़र आएंगे, ग्रास लैंड भी नज़र आएंगे, फार्म लैंड भी नज़र आएंगे, डेजर्ट्स भी आएंगे। तो ये जो लैंड्स हैं, लैंड जो है मेजर रीजन ऑफ वेजिटेशन, जहाँ पे वेजिटेशन मीन्स कि वहाँ पे प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, प्लांट लाइफ एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट तरह के प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इन रीजन में प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये रिपीटिंग इक्वेटर से जूं जूं आप जाते जाओगे इक्वेटर, जैसे ये एक इक्वेटर, इस साइड पे भी कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, अभी डेजर्ट डेजर्ट हो सकता है, इस साइड पे भी डेजर्ट हो सकता है, फिर टंड्रा हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, इस साइड पे भी सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों साइड पे जो है वो डिफरेंट जो है वो रीजन्स हो सकते हैं। ये दोनों साइड पे पैटर्न जो होता है वो रिपीट हो रहा होता है, यानी कि सिमिलर काइंड ऑफ रीजन्स एग्जिस्ट करेंगे। तो इन जो ये जो रीजन्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं अर्थ में, इनको हम कहेंगे बायोम्स। सो डिसाइडिंग फैक्टर्स ऑफ बायोम्स, क्या चीज़ डिसाइड करेगा कि बायोम किस तरह के होंगे, हम मतलब बताएंगे डिफरेंट तरह के बायोम्स कौन से होंगे। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन डिसाइडिंग व्हाट कैन लिव वेयर। तो टेम्परेचर जो है वो ये बताएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि animals and plants and different organisms, they are made differently. So some plants and animals they exist in cold climates, जो इक्वेटर है उसके बहुत दूर एग्जिस्ट करेंगे, जो कुछ हैं जो इक्वेटर के करीब एग्जिस्ट करेंगे। इट इज़ द मेन कंट्रोलिंग फैक्टर फॉर द पैटर्न ऑफ बायोम्स, ठीक है। तो बायोम्स जो है वो कौन डिसाइड करेगा, टेम्परेचर डिसाइड करेगा। ओके, गोइंग नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर द टेम्परेचर ड्रॉप्स। ओके, जब आप इक्वेटर की नॉर्थ साइड पे या साउथ साइड पे मूव करोगे इक्वेटर से, इफ यू आर गोइंग फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, देन टेम्परेचर विल ऑटोमेटिक, बेशक आप नीचे की तरफ जा रहे हो साउथ या नॉर्थ की तरफ जा रहे हो या साउथ की तरफ जा रहे हो, टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप करेगा। दिस कंट्रोल्स व्हाट प्लांट्स कैन ग्रो। तो इसकी वजह से जो है ना वो प्लांट कंट्रोल होंगे। अब दिस इन टर्न्स अफेक्ट्स द एनिमल्स दैट कैन लिव देयर। तो उसकी वजह से वो जो है वहाँ पे जब डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट रीजन में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कैक्टस एक प्लांट है, वो सिर्फ हॉट क्लाइमेट में ग्रो करेगा, तो वो जो इक्वेटर के करीब जो गर्म जगह होगी, डेजर्ट डेजर्ट होगा, वो वहाँ पे ग्रो करेगा। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ कोल्ड क्लाइमेट्स में ग्रो करते हैं, तो उसकी वजह से अब वैसे ही वहाँ पे जो है वो जानवर एग्जिस्ट करेंगे। अब कुछ जैसे कैमल है, वो गर्म जगहों वो कैक्टस खाएगा, या फिर वो डेजर्ट में रह सकता है, वो गर्म जगह पे रह सकता है, तो वो ठंडी जगह पे नहीं रह सकता। ऐसा डिफरेंट एनिमल्स है। ओके, so these are there are local variations in the biome because of the positions of lakes or mountains. If you look at the map, you will see that the main pattern of the pattern of um, मैट बैटर इज कंसिस्टेंट ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। डिफरेंट जो जगह आप लोकली देखेंगे तो थोड़ी लेक्स, किसी जगहों पे लेक्स भी होंगे, रिवर्स भी होंगे, और फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से जो है ना थोड़ी वेरिएशंस आएंगी, चेंजेस आएंगी जो बायोम्स में। लेकिन अम, लेकिन जो मेन जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, इक्वेटर की उस साइड इक्वेटर की साइड। कभी जैसे डेजर्ट है तो वहाँ डेजर्ट ही होगा, पूरा ड्राई होगा। अगर उसमें कोई कोई लेक आ जाए या रिवर आ जाए, इस तरह की कोई चीज़ आ जाए, तो वो उसको इफेक्ट करेगी बायोम, इट विल इफेक्ट द बायोम, बट अदर देन दैट द मेन थिंग जो है द मेन फीचर्स दे रिमेन द सेम। So let's look at different types of biomes. First of all is tundra. टंड्रा जो है बेसिकली व्हाट इज टंड्रा, इन दिस जो ये जो टंड्रा जो एक बायोम है, साउथ soil is permanently frozen
just below the surface. Um, okay, soil is permanently frozen just below the surface. Plants are low growing. Animals usually migrate to warmer places in winter. So tundra is one of the biomes जिसके बारे में उन्होंने बताया कि इस लैंड में मोस्टली जो सोयल है वो परमानेंटली फ्रोजन होता है बिलो द सरफेस, मतलब सरफेस के नीचे जो है वो सोयल जो परमानेंटली फ्रोजन होता है और प्लांट जो होते हैं वो कम ग्रो करते हैं और एनिमल्स जो हैं वो यूजुअली दे माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस। तो गर्म जब सर्दियाँ होती हैं तो ये बहुत ठंडा हो जाता होगा तो जिसकी वजह से एनिमल्स जो होते हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टंड्रा रीजन जहाँ पे देखें आपके जैसे विंटर्स हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी है। तो ये एक टंड्रा जो बायोम है बेसिकली इसको हम कहेंगे ये टंड्रा बायोम है, ठीक है, जहाँ पे जो है वो प्लांट जो है वो कम ग्रो करते हैं और बिकॉज इन कोल्ड वेदर द स्नो फॉल्स एंड द usually plants don't grow, so animals the plants don't grow, then the animals they don't need and they don't have anything to feed on, so that's why and because of the temperature also they need to migrate and they migrate to other warmer places in winter. So this is an example of showing the pictures of tundra region. Next is coniferous coniferous forest. This is one type of forest, coniferous forest. This has long winters and cool summers. So this biome it has long winters. यहाँ पे ये जो इस तरह की फॉरेस्ट है कॉनिफेरस, यहाँ पे जो विंटर्स हैं वो बहुत लंबे होते हैं और समर्स जो होते हैं वो ठंडे होते हैं. देर आर माउंटेनियस रीजन्स जहाँ पे लाइक I can just give you one example. Not in just like Kashmir. We have Kashmir in Pakistan where winters they are not too long but long, and the summers are not too warm as well. The summers are cooler. There is short growing um, there is a short growing season. Okay. So the season summer seasons it doesn't really exist. There's only one type of season, that's winter. Plants need adaptations to survive the cold. Plants need adaptations to survive the cold. So whatever plants they grow in this coniferous forest, uh, they need adaptation. They will change their behavior to survive in these types of forest. Animals migrate or hibernate in winter. So because some animals they don't particularly can survive winters, so they have to hibernate or they have to hibernate or they migrate to other warmer places. Then we have deciduous forest. The winters are milder and animals can usually survive by hibernation. So the winters they're not too harsh, they're not very cold in these types of forest, and the animals they whenever there is a lot of winter, there's a lot of cold, they will hibernate, they will hide under the surface, under the earth, the soil or somewhere in a warmer place. And a longer growing season means that a greater variety of plants and animals can live there. There is more diversity. So in this forest there is a lot of diversity, and because there are different seasons, there's a different there are different seasons, and so there are a lot of plants and animals they can survive, plants can grow, and that's why animals different animals can survive, and there's a lot of variety, diversity means बहुत से different types of animals और species exist करेंगे because वहाँ plants भी survive कर सकते हैं जिसकी वजह से different animals भी survive कर पाएंगे. This is an example of coniferous forest. ये coniferous forest की एक example है और this is a picture of a deciduous forest. So अब यहाँ पे you can see that there are lot of plants और यहाँ पे थोड़ी सी different season exist करते हैं, summers भी आते हैं की वजह से यहाँ पे जो है ना प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे. नेक्स्ट वी हैव Mediterranean region. This has mild winters and summer drought. Plants are scrubby. Animals stay all year. Some migrating animals spend the summer here. Okay, this is an example of scrubby plants.
and there are mild winters, so the winters are not very harsh in these Mediterranean regions. And summer drought, there is a lot of um, summers are stronger than the winters, if we can put it lightly. And the plants are scrubby because they don't get enough water, probably that's why. And some migrate and spend the summer here. So there are the animals who migrate from different colder regions. They will stay in the Mediterranean region. Desert तो अब सहरा जिसको कहते हैं, you all of know this. This has less than 25 centimeter of rain a year. So desert is mostly warm, and there are cold desert as well, but mostly the desert is warm, and the rainfall is less over there. Fast growing, short lived plants reproduce when it rains. So when there is rain, then the plants they grow fast, but they don't live very often because then they don't get water enough. Animals are often nocturnal. Nocturnal are basically those animals which exist, which are found in night, which survive in night, which come out in night. Okay, nocturnal, for example, owl, bats. These are nocturnal animals. Then we have savanna. This is hot and too dry for forest, so open grassland results. Herd animals and insects thrive in this kind of area. Some migrating animals spend the summer here. Okay, so this is also savanna. This is an example of savanna forest, and okay, this is not very uh, you know this is not very dry. This is hot and dry. So there are open grasslands, as you can see. There's open grassland, घास है और open सी जगह है. इस जगह पे बहुत ज़्यादा जैसे हर्ड्स होते हैं, शीप डियर के हर्ड्स, एलिफेंट्स के हर्ड, जैसे बहुत सारे जानवर जब इकट्ठे होकर चलते हैं तो उनको हम हर्ड्स कहते हैं. इसमें भी ये भी इसमें क्लाइमेट है वो माइल्ड सा क्लाइमेट होता है, तो यहाँ पे जो है ना वो एनिमल्स जो है वो अपना समर्स जो है वो यहाँ पे स्पेंड करते हैं. Then we have rainforest. Rainforest, it is hot and rains every day. So rainforest basically जंगल जहाँ पे बारिशें होती रहती हैं ज़्यादा. It is hot और rains every day. बारिश, और there is no seasonal change. सीजन जब वो चेंज नहीं होते, जैसे ऑटम विंटर समर एक ही सीजन रहते हैं. This allows very rapid growth. जहाँ पे बारिशें होती हैं तो वो जल्दी चीज़ें उगती हैं, तो दैट्स व्हाई जल्दी जल्दी ग्रो होती है चीज़. अ ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव हियर. सो रेन फॉरेस्ट में जो है ना वो बहुत ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश होती है, सूरज भी होता है, हर चीज़ होती है, प्लांट्स होते हैं, तो एनिमल्स भी सर्वाइव करते हैं, प्लांट्स भी सर्वाइव करते हैं. ग्रोथ भी जल्दी जल्दी होती है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को जो है वो पानी भी मिलता है, सनलाइट भी मिलती है, और बाकी ऑक्सीजन भी मिलता है, तो इसमें जो है अच्छे तरीके से जो है रैपिडली जल्दी जल्दी चीज़ें ग्रो करती हैं. और यहाँ पे वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं. Mountain, it is a tough place for plants to live. It's windy, cold, and sunlight. All these altitude is very strong. Okay? It is windy, cold, and sunlight at these altitude is very strong. So यहाँ पे भी जैसे mountainous regions है, तो mountainous वो है तो माउंटेन्स बायोम है, तो वहाँ पे प्लांट्स जो है वो टफ तो नहीं होता, लेकिन जहाँ पे जैसे कोल्ड माउंटेन जहाँ पे बर्फ होती है, कोल्ड होता है, तो स्ट्रॉन्ग होती है, सनलाइट भी स्ट्रॉन्ग होती है और विंडी होती है, तो वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करते हैं. सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स हैं, जो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जिनको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया. So in this topic, we have discussed about biomes, different types of biomes. So now there are some questions जिनको आपने answer करना है. What is a biome? What is the main controlling factor that creates biomes? Why do plants and animals need to be fast growing in deserts? In which biome would you expect to find the greatest diversity of life? Explain why. ये जो चारों questions है, और ये भी, why isn't the earth
called the season sea, since so much of it's covered by water. You have to अपने ये सारी अपनी एक शीट पर you have to write the questions, और इसके answers भी आप लोगों ने लिखने हैं. You have to write the answers as well. I have explained all of these answers. I have explained all the chapter, and the answers exist in this lecture. So if you don't understand anything, then you can contact the school administration, and I'm here to answer all your queries. um, so so now अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो you can ask me, or then take care, and Allah Hafiz.